As the festive season begins in India, the beauty of its celebrations lies in the unity among people of all faiths. And today we take you to Ahmedabad city of Gujarat, where Hindu traders and residents are flocking in to purchase Rakhis or traditional wristbands from Muslim artisans. This heartwarming tradition highlights the festival spirit and strengthens bonds of unity and friendship. Stay tuned as we explore this touching celebration of togetherness. As Raksha Bandhan is celebrated across India, a heartwarming story of communal harmony unfolds. Although the festival has its roots in Hindu traditions, Muslim artisans in various parts of the country play an important role in making the celebration special. In the busy streets of Gujarat's Ahmedabad, a unique tradition takes place every year, where Hindu traders and customers come to Milat Nagar, a predominantly Muslim neighborhood, to buy intricately designed Rakhis. This touching tradition has been a key part of the city's festive spirit for decades. The Rakhi makers of Milat Nagar are a symbol of hope. Their dedication to their craft and their willingness to contribute to the festive spirit of another community reminds us that unity and harmony can prevail. यहाँ हर डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है और बहुत अच्छी तरह की वैरायटी मिलती है जो बाहर नहीं मिल पाती है और रेट भी बहुत अच्छा रहता है कि जो बाहर नहीं मिलता है। और यहाँ आने के बाद ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ले और क्या ना ले, मतलब बहुत डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है यहाँ पर। दोनों भाईचारा होता है क्योंकि मुस्लिम लोग हैं वो बनाते हैं, उसकी दुआ होती है और हम हमारे भाइयों को बांधते हैं वो राखी। हम सालों से यहीं से ले जाते हैं। ऐसा है कि ये लोग बनाते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग, मगर ऐसा नहीं है, वो दोनों मिलकर ही सब त्योहार बनाते हैं। From the bustling markets of Uttar Pradesh and Rajasthan to the small towns of Gujarat and West Bengal, Muslim families have been carefully crafting Rakhis for generations, weaving each thread with care and a sense of shared purpose. The Rakhis made in Milat Nagar, Gujarat are famous not only for their beauty but also for their cultural significance. The artisans, many of whom come from families who have been making Rakhis for generations, blend tradition and innovation in their designs. The tradition of Muslims making Rakhis for a Hindu festival is more than just a business. It is a living example of how communities can come together, respecting and celebrating each other's beliefs and traditions. यहाँ पे तो कई सालों से राखी का काम होता है। यहाँ साल के 12 महीने काम होता है और सीजन आने से पहले रक्षाबंधन के 4 महीने पहले से हमारा होलसेल का धंधा भी चालू हो जाता है। यहाँ पे फिर 1 महीना जो बचता है हमारा रिटेल का, हम यहाँ पे पूरा मिल्लत नगर राखी का कारीगर स्पेशलिस्ट है सब, और मुसलमान भाई बहनें भी यहाँ पे सब बनाते हैं और हिंदू सब आते हैं यहाँ पे और खुशी खुशी सब ले भी जाते हैं। अपनी कौमी एकता सब बने रहे, ये अपनी शुभेच्छा है। Raksha Bandhan, a festival that symbolizes the protection and love between brothers and sisters, has become a testament to India's diversity and inclusiveness. The Rakhis made by Muslim artisans for the Hindu celebration are a powerful example of how diversity can unite us, showing the magic that happens when different communities work together in harmony.